हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रो रिच विथ नॉलेज। किसी बड़ी हस्ती ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल, फॉलो रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन। इफ़ यू फॉलो देयर फुटस्टेप्स, देन नो वन कैन स्टॉप you becoming like them. But with the hard work and a smart work, it is not possible to take an advice from successful and rich person. So in order to acquire knowledge about them and to learn their principles that they had contributed their books to the world. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो सिंपल है बट इजी नहीं है। यहाँ बहुत बिगिनर्स होते हैं लेकिन एंड तक कोई नहीं रहता। इट्स बिकॉज पीपल एंटर हियर विदाउट नॉलेज और लेस नॉलेज। So we need to prepare ourselves before entering to the stock market. According to the population of India, only 0.1% had invested in stock market, whereas in America, 99.9% American invest करते हैं stocks में. So we still have chances. So in today's video, I'll suggest some books जो कि beginners के लिए है, stock market में enter होने के लिए, which were written by great personalities. And I'll give some information about the books. पहला बुक है One Up on Wall Street by Peter Lynch. Peter Lynch जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है, जिसको हम लोग प्रोपोनेंट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। लिंच अपने बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में वेल नोन मंत्रस दिया है फॉर मॉडर्न इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग, जैसे कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो एंड टेन बेगो। पीटर लिंच ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट। इस बुक में पीटर लिंच एडवाइस देता है कि पॉइंट नंबर 1, ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कुड अफोर्ड to lose without that loss having any effect on your daily life in the foreseeable future. Point number 2, invest in companies, not in stock market. Point number 3, ignore short-term fluctuations. दूसरी बुक है The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Benjamin Graham जो कि father of value investing माना जाता है, an economist, professor and investor. बेंजामिन ग्राहम अपने बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड नेवर गिव अप। इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग और स्पेक्यूलेटिंग, मिनिमाइजिंग डाउनसाइड रिस्क, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां वो लो प्राइस में कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी बियॉन्ड द हॉराइजन। ओवर शॉर्ट टर्म वी हैव नो वे ऑफ नोइंग व्हाट मार्केट विल डू। तीसरी बुक है बीटिंग द स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। इस बुक में पीटर लिंच एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू डिवाइज अ म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो शोज हिज स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज फॉर पिकिंग द स्टॉक। सिर्फ यही नहीं, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन्वेस्टिंग में। अगर आप लोग ये सब बुक्स का डिटेल वीडियो चाहते हो स्टॉक मार्केट सीरीज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो आई विल मेक ए डिटेल वीडियो ऑन एवरी बुक्स। चौथा बुक है द वॉरेन बफेट वे बाय रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम। In this book, Robert G. Hagstrom outlines the business investment principles of value investing practiced by Warren Buffett, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि कैसे वॉरेन बफेट बिजनेसेस खरीदते हैं, मैनेजिंग पोर्टफोलियो, परचेजिंग बिजनेस विथ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। और भी बहुत सारा बुक्स है जैसे स्टॉक्स टू रिचेस, हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। The more you read, the more you gain knowledge. Invest in yourself because your greatest asset is your mind. If you like the video, hit the like button and share with your friends and families. And if you are new to this channel, subscribe the channel and hit the bell icon for more knowledgeable videos. Thank you and goodbye.